Assalamu alaikum. Okay, today is the last class of Project 2019. I will cover the baselines concept in project management, and then I will explain the earned value management, because in the executing phase of the project, whatever we do it according to the project baselines, and that is monitored through the earned value management. So earned value management is used to measure project performance against the scope, schedule, and cost baseline. So afterwards, once it is clear, we'll go to the project software and we will put the values over there, and then we will find out, okay, how to manage these related baselines work in the project software. So what is baseline? There are three baselines in project management. Number one is scope baseline, if you remember. Then we have the schedule baseline. And finally is the cost baseline. So a scope baseline can includes a scope statement, then work breakdown structure and work breakdown structure dictionary. Then in a schedule baseline, what we do, we take the work breakdown structure work packages and we further divide it into smaller components. Those are called activities. Then we define activities, we sequence activities, we call a meeting with the team members, and what we do, we try to find the resources for those activities, and we find the duration for the activities. And once it is done, we fall into the develop schedule process where we draw a network diagram and we calculate each and everything, that is early start, early finish, late start, late finish, floors, number of paths, critical paths, non-critical path, near critical path, and we find the total duration for the project. And once that document is approved, that becomes the schedule baseline. And in the last phase of the project, as far as the cost management is concerned and baseline, what we do, we take the work package activities and we try to find out and estimate कि भाई कौन सी एक्टिविटी कितने पैसे में कंप्लीट हो जाएगी. Once that is done in the estimate cost and determine budget process, and finally we get approval from the project sponsor, and that becomes your cost baseline. So there are three baselines. Number one is scope baseline, then we have schedule baseline, and then we have cost baseline. So when the project actually starts in the executing phase of the project, obviously you get into the executing phase when these documents are formally approved from the project sponsor. So जो ही हम उसमें next phase में जाते हैं, we try to monitor the project with the help of earned value management. So what is earned value management? Earned value management is used to measure project performance against the scope, schedule, and cost baseline. And there are three parameters in earned value management. Number one is planned value or budgeted cost of work schedule, BCWS. You have 5 activities. Each, and for example, activity 1 will start in first week of January, second will start in the second week of January, then third, and then fourth, and then fifth, and the project will complete it on 15th of February, for instance. So these are the baselines. You have to complete each and every activity in 7 working days or in every week of the month, and that is because that's your base planned value. So planned value is the authorized budget assigned to the scheduled work. It is authorized budget planned for the work to be accomplished for an activity or work breakdown structure component, not including the management reserve. Then, for instance, in this example, you can see that in the month of January, you will perform task number 1. Then in the month of February, you will perform 2 activities, activity 1 and activity 2. Activity 1 will take $6 to complete, and activity 2 will take $8 to complete. So this is your planned value for the project activities. I will show you with the very simple example. You will understand each and everything. Don't worry about it.
Then we have earned value. Earned value is a measure of work performed expressed in terms of a budget authorized for that work. Whatever we do, we put the percentage value in the software, and then we can easily find out कि भाई हमारा कितना budget रह गया है और कितना हमारा हो चुका है, and it calculates accordingly. Then we have the actual cost, the actual value we have invested on any activity to complete that work. So we rely on three parameters. Number one is planned value, number two is earned value, and number three is the actual cost. And based on these three parameters, we calculate many things like budgeted cost, BAC, budget at completion, estimate at completion, ETC, various at completion, and there are different methods in the earned value management which we use. You have learned these formulas and these terms in the project cost course. I'm just trying to recap it because we use it in a project software as well, and project software calculate this work automatically for you. That's why I'm just trying to recap these terms used in the earned value management. Now we have a very simple example. I will rely on this example for today's session, and I'll try to explain how we can use it in project software. So you have a project to build a new fence. The fence is four-sided. Each side is to take 1 day to build and is budgeted for $4,850 per side. The sides are planned to be completed on after the other. It means the relationship between side 1 and side 2 is finished to start. Side 2 and side 3 is finished to start, and side 3 is and side 4 is finished to start. That's why the sides are planned to be completed on after the other. And today is the end of day 3. So based on this scenario, you need to find plan value, earned value, actual cost, SPI, CPI, schedule variance, cost variance, TCPI. For instance, there is estimate at completion, there's a BAC at budget at completion, there's a VAC at completion. So there are many formulas we use to check the progress of of our project. So the project software calculates it for you from the very beginning. So what we have to do is we need to just put these activities in the software, and the side 1 is, for instance, completed. The side 1 is supposed to charge 4,850, but it is completed with the cost of 5,500. फिर उसके बाद side 2 है, then we have side 3, then we have side 4. So let's open the project software, and I will put these value in the project software. Let me share this screen. Okay. So when we open the software, what we do first, we set up two things first. Number one is go to the project software. We put the project information, like the project will start on, for instance, 22nd of August, and the project will complete on, for example, 25th of August. So this is my, this is our current date, sorry. Okay, so this is the start date of the project, and then you need to provide the project calendar and just click OK. Now, in the example which I just presented to you, there were 4 sites. For instance, site 1, site 2, site 3, and site 4. Fine. So task mode must be auto scheduled unless until you need it. Unless you use manual schedule task when you don't know the duration or the start or finish date of the project, or there's some information missing, then we use manual schedule task. Otherwise, we use auto schedule task. So in this example, we know that site 1, site 2, site 3, and site 4 will take 1 day to complete. So just simply provide 1 day, 1 day, 1 day, and 1 day.
So this is how the teal bar color is solid. You can see in the time scale. Acha, the project start date is the first activity will start on August 22 and will complete on the same day because the duration is 1 day. Next activity will start on 22nd, 23rd, then this one 24th and this one 24th. So there are two methods. Number one, directly apply to provide the predecessors to site 2, 3, and 4. It will automatically set the start date and finish date for you. For example, if I provide the site 1 row number that is a predecessor of site 2, here if I enter 1, that's a row number 1. Fine, enter. So did you notice here August 23 has been set for you. If I provide this row number 2 for the site 3, this date, start date and finish date will change. 24 now. And here if I provide this thing, for example 3, so now I can see this and the time scale. This is how my project will go. Site 1 on Monday, site 2 on Tuesday, site 3 on Wednesday, and site 4 on Thursday. Okay, so I have provided the complete list of activities to the project software. So this is my schedule baseline. This is my schedule baseline. Now, how project software calculates cost baseline or estimate cost for the project? So that is done through the resource sheet. You need to go to the view tab and click on the resource sheet. Now here I need to provide resources for the project activities like the labor for the project work. It's a human resource, so type is work, and per day is, for example, per day is 850 rupees or dollar per day. That's why slash and followed by day. And material, for instance, is a material resource, complete material. If I say that's a complete in material, including everything, fine. So it's a material resource, and the material resource is 4,000. That's it. इसके साथ आप per day या per month ये आप use नहीं करते, ठीक है जी? So 2 resources I have provided. When I go back to the task tab and click on the Gantt chart, जब मैंने site 1 पे click किया तो in the task tab, go to the properties section and then click on the detail button. You can see, you will notice that another form will open for you, that is task detail form. So you just click this site 1 and provide the resources for the project. That is resources complete material. And then we have a label. So just click here, select and click OK. Then click site 2, provide the same resources because that is another day. That is day number 2. For the day number 3, you need to provide resources as well. That is labor, click OK. And for day 4, that is labor, and click OK. Now, I have assigned resources for all 4 activities for the in this project. When I click here, site 1, and I click right and click on the cost, you can see it has calculated $4,000 for complete material, and labor will charge 850. What if we set it for rupees, for instance? I go to the display tab and currency. If I set PKR, that is Pakistani currency, PKR. Here. Okay, that's now. Now it's very simple. Complete material is 4,000 rupees and labor is 850 per day. For all sites, the project software has calculated
or estimated the cost for each and every single activity. So these are my cost estimates. Fine. So once I get a formal approval from the project sponsor, that becomes my cost baseline as well. Now I have provided the list of activities. I have assigned resources to the project activities. I have entered the cost and the project software has calculated cost for me. Now everything is ready as far as the planning phase of the project is concerned. So what we do, we take a formal approval of cost baseline, schedule baseline, and cost baseline from the project sponsor. Once it is approved, we can get into the executing phase of the project. Fine. So what to do? We need to click, we need to go to the project. Fine. And you need to set baseline. Go to the project tab. And once the project sponsor has approved the project file for you, you go to the project tab and click the set baseline. You click the set baseline, another dialog box will appear for you. You just, here we have 11 baselines you can provide. So this is my first baseline. So I will just click here, baseline for the entire project, and I will click OK button. Once I click the OK button, now you can see that the activity 1 has this detail. Complete material will cost 4,000, labor will cost 850 rupees. This is my baseline. This is my actual cost because the project has not been started yet. So what to do? We need now on day 3. Let me share the project PowerPoint slide again. Let me go back to the problem which we are trying to discuss today. That you have project to build a new fence. The fence is 4-sided. Each side is to take 1 day to build and is budgeted for 4,850 per side. The sides are planned to be completed on after the other. Today is the end of day 3. Today is the end of day 3. So how to set day 3 in the project software? You go back to the project software in this example, and under the project tab, go to the status section and then click on the status date. The project was started on 22nd of August, 22nd, 24th, and 25th. 22nd, 23rd, 24th. Today, day 3. So I will provide a date that is 24 because the project was started on Monday, Tuesday, and Wednesday. This is day 3, where side 1, side 2, and side 3 is supposed to be completed. So just select 24 and click OK button. Now you have provided the status date for the project because based on this date, the project will calculate the earned value management and the cost variances and everything. So I have provided that date. Now go back to the task tab, click the Gantt chart section, and in this intersections area, right click and then click the summary. When we click on the summary tab, you can see that side 1, side 2, side 3, and side 4. There were 4 activities which we had to perform in this project. Her activity एक दिन ले रही है, so there is a start date and end date, and here you can see that there is 0% progress for all activities because we have not updated the information yet in the software. And this is the cost, 8,850 per site. This is my planned value. 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 Fine. So for each and every site, the planned value is 4,850 rupees. And 8-hour work is needed for each activity. So how to update the progress for the project? Just simply select any row, go to the task tab under the schedule section, select mark on track. सही है जी. जब मैंने mark on track किया तो here did you see the percentage of work completed is 100%. It's set to 100%. इसने automatically set कर दिया. तो एक तो ये तरीका है आपका इसको अपडेट करने का. लेकिन इसको अपडेट करने से पहले मैं एक और चीज पे आपको ले जाना चाहता हूँ. I want to go to the tracking section.
This was a summary. The tracking section represents different picture. Here हमने अभी तक project को update नहीं किया. So actual started the project has no information. Actual finish date has no information. The percentage of work completed has no information. क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको अपडेट नहीं किया. अब मैं यहाँ पे इसको अगर अपडेट करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड मार्क कॉन्ट्रैक्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखें इसने क्या किया. मैं इसमें कुछ कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए. मैं यहाँ पे इंसर्ट कॉलम डालता हूँ और बेस लाइन स्टार्ट डेट में लिख लेता हूँ. So baseline start date is 22nd of August, but actual start date is not available. Why not available? Because we did not assign or set dates to it. अब यहाँ पे actual finish date में check करना चाहता हूँ, insert पे जाएं तो baseline finish date. अब यहाँ पे baseline finish date assign हुई है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल डेट ये एरिया और ये एरिया और ये और फिजिकल और एक्चुअल ड्यूरेशन रिमेनिंग डे ये आपके लिए कैलकुलेट इसने इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि आपने प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर को अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए कोई ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया. अब आपने परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड करना होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जाएंगे मार्क कॉन्ट्रैक्ट पे. मार्क कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे तो आप देखें प्रोजेक्ट ने आपके लिए कैलकुलेशन खुद ही कर ली कि 22 अगस्त को ये एक्टिविटी कंप्लीट होनी थी, स्टार्ट होनी थी. 22 अगस्त को स्टार्ट हुई, अपने टाइम पे ही फिनिश हुई, 100% कंप्लीट हो गई. ठीक है जी. एक्चुअल ड्यूरेशन 1 डे था, रिमेनिंग ड्यूरेशन 0 डे है. एक्चुअल कॉस्ट 8,850 इसने आपके लिए कैलकुलेट की है. ठीक है जी. लेकिन इशू ये था कि अगर आप पावर पॉइंट में जो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूं उसमें हुआ क्या कि जो साइट 1 थी वो 4,850 में कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. वो जब काम कंप्लीट हुआ तो 5,500 में ये काम कंप्लीट हुआ, यानी मेरे पैसे ज्यादा लग गए उस काम में. तो अब वहां पे मैं क्या करूं कि मैं इसमें प्रोजेक्ट में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि भाई मेरा काम जो मैंने स्केड्यूल किया था डे 1 के लिए मंडे को वो 4,850 पे होना था, लेकिन जब वो दीवार कंप्लीट हुई तो उसमें मेरा जो खर्चा आया, जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट आ गई, वो 5,500 रुपए लग गए. तो वहां पे ये प्रॉब्लम जो है जब इस तरह की आती है तो आपने प्रोजेक्ट में इंफॉर्मेशन को अपडेट करना होता है. सो यू नीड टू गो बैक टू द गैंट चार्ट सेक्शन, select the site 1 and here you can see the complete material is 4,000 and labor is 850. अब आपके तकरीबन 650 रुपए आपके ज्यादा लगे हैं, यानी यहाँ पे लेबर तो लेबर है, यहाँ पे आपके फॉर इंस्टेंस एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज्यादा आ गई है. तो बेस लाइन कॉस्ट आपकी 4,000 थी, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, इसको आपने चेंज करना है. ठीक है. आपने सिंपली जाना है यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट में, और एक्चुअल कॉस्ट में ये इंफॉर्मेशन आपने इसको प्रोवाइड कर देनी है कि फॉर इंस्टेंस 4,650 रुपीज, रादर 4,000 रुपीज मेरा यहाँ पे खर्चा हुआ है मटेरियल के ऊपर, आप इसको प्रोवाइड कर देंगे. अब बेस लाइन आपकी 4,000 थी, एक्चुअल कॉस्ट आपकी 4,650 आ गई. तो प्रोजेक्ट इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में सारी कैलकुलेशंस आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा. ठीक है जी. अच्छा, फिर साइड 2 में आप देखें, साइड 2 में इशू वहां पे जो पावर पॉइंट की एग्जांपल में आपको बता रहा था, वहां पे आपका जो लेबर है उस पे पैसे आपके कितने लगे. अच्छा जी, मैं इसको भी मार्क कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, मार्क कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, उस एग्जांपल में आप देखें तो साइड 3 जो है 79% कंप्लीट हुई थी. तो अब 79% को मैं कैसे अपडेट करूं. आप सिंपली इसी सेक्शन में आएंगे और कंप्लीट सेक्शन में आप 79% पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपने ओके करना है. तो आप देखें इसने ऑटोमेटिकली आपके लिए कैलकुलेशंस यहाँ पे कर दी, क्योंकि ये एक्टिविटी ऑन प्रोग्रेस है तो इसमें ये आप इंफॉर्मेशन अभी इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते. अब साइड 2 में मेरे 4,850 लगने थे, लेकिन एग्जांपल में आप चेक कर सकते हैं, एग्जांपल में आपके जो साइड 2 पे टोटल कॉस्ट जो आई वो 5,000 रुपीज आई फॉर इंस्टेंस. तो अब मैं यहाँ पे यानी मेरा 150 रुपए ज्यादा लग गए हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जी आपके पास साइड 2 पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मेरी एक्चुअल कॉस्ट 4,150 लगे हैं, रादर 4,000. मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैंने ओके कर देना है.
ठीक है जी, यहाँ पे साइड 1, साइड 2, साइड 3 इज ऑनगोइंग। अब मैंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, मैंने जितनी करनी थी प्रोजेक्ट में। अब मैं वापस जाता हूँ ट्रैकिंग सेक्शन में। अब ट्रैकिंग सेक्शन में जाके हमने जब देखा तो ये इंफॉर्मेशन इसने सेटिंग कर दी 100% कंप्लीट, 100% कंप्लीट। दिस इज माय अर्न वैल्यू, फाइन, दिस इज माय अर्न वैल्यू। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आप देखें वन डे 0.79 और एक्चुअल कॉस्ट मेरी अब देखें कितनी आ रही है, 5500, 5000 एंड 3831। इससे ऑटोमेटिकली आपके लिए कैलकुलेशन कर ली एक्चुअल कॉस्ट की जो इस एग्जांपल में थी। मैं यहाँ पे अब ऐड करना चाहता हूँ बेस लाइन कॉस्ट। तो अब यहाँ पे देखें बेस लाइन कॉस्ट क्या थी, 8850। दिस इज माई अर्न वैल्यू, दिस इज माई सॉरी दिस इज माई प्लान्ड वैल्यू, दिस इज माई अर्न वैल्यू, and this is my actual cost. So based on these three parameters, the project software automatically calculates the schedule variance, cost variance, schedule performance index, cost performance index, estimate at completion, budget at completion, to complete performance index, and variance at completion. So ये सारे formulas आपको याद है, ये earned value management के थे। तो वो आप क्या करेंगे, for that purpose you need to go to this intersection section and click here and click on the more tables, and here you select earned value earned value and click apply. जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो here you see the planned value is 8850, earned value is 8850, and this is your actual cost. This is your schedule variance, this is your cost variance, this is your estimate at completion, this is your budget at completion, and this is your variance at completion. If you want to add any more column, you can, for example, SPI. So आपकी SPI आ गई, आपकी सीपीआई आपने कैलकुलेट करनी है तो सीपीआई आ गई। ठीक है जी, आपने टीसीपीआई कैलकुलेट करना है तो टीसीपीआई आ गई थी। ये सारी कैलकुलेशंस आपके लिए प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड हैव अ कंप्लीट कमांड ऑन द अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एंड द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑल रिलेटेड टू द स्केड्यूल, कॉस्ट एंड स्कोप बेसलाइंस एंड नॉलेज एरिया इवन। सो वो तो आप सब पढ़ चुकी है, मैं आपको से बता रहा हूँ प्रोजेक्ट में। So once we enter this information and provide this information, the project software does everything for you. You need to just understand what does planned value mean, what is earned value, what is actual cost, how the schedule variance, cost variance, estimate and completion, budget at completion, variance and completion, schedule performance index, cost performance index, and to complete performance index, and things like that are calculated, and what is the use of these methods. So जब ये सारा हो जाता है, so then after that we go to the report section and we can generate multiple reports. For example, I click reports and then I click the cost overview for instance. So जब मैं cost overview पे क्लिक करता हूँ तो मेरी सारी डिटेल्स मेरे पास ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे ग्राफ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए साइड 1 2 3 4 एक्चुअल कॉस्ट मेरी ये आ गई, रिमेनिंग कॉस्ट मेरी ये हैं, बेस लाइंस मेरी ये थी, कॉस्ट मेरी ये थी, और ये मेरी वेरिएंसेस आई हैं। साइड 1 जो है उस पर इजाफी 650 रुपए लग गए, साइड 2 पे 150 रुपए इजाफी लग गए, साइड 3 क्योंकि ऑन गोइंग है तो कैलकुलेट नहीं करेगा अभी आपके लिए, और साइड 4 जो है ये मेरी आ रही है। और देखें ये ग्राफ भी बना हुआ है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपकी बेस लाइन थी, आप थोड़ा सा वेरियंस आपकी इधर आ रही है, यहाँ पे आपकी ज्यादा वेरियंस आई है। ओवरऑल कॉस्ट जो है आपकी इतनी जा रही है, रिमेनिंग कॉस्ट इतनी है, आपका प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट हुआ है। अच्छा, मजीद बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं इसमें, मैं आता हूँ रिपोर्ट सेक्शन में, और मैं प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे प्रोजेक्ट ओवरव्यू में बहुत अच्छी डिटेल्स आपको मिलेंगी, लाइक साइड 1, साइड 2, साइड 3 एंड साइड 4। साइड 1 has been completed 100%, so here it is set to 100% here. It has also been set to 100% over here because this side 2 is finished, and side 3 जो है 79% at the end of day 3 मेरी complete हुई है, and side 4 has not been started yet. So this is the project overview where the project overall is 70% completed, and this is my start date and end date of the project duration, and whatever the milestone, if you enter you will see the list of milestone over here in this section. So go back to the report section, and then we have
project overview, upcoming tasks. What are the upcoming tasks since the site 3 is 75%, 79% completed? So you need to start this activity as well. And site 4 activity has not been started yet. So here site 3 has these resources needed to complete. Start date was 24th of August. And the same date it must be finished where it not finished. So you will have to delay this work. And this is your site number 4, which will start on this date. So go back to the project reports. Project work overview अगर आप देखना चाहते हैं तो रिमेनिंग वर्क जो है 9.68 आवर्स है, एक्चुअल वर्क 22 घंटे और 22.32 आवर्स आपने प्रोजेक्ट का कंप्लीट कर लिया है. This is the difference between the project remaining work and the actual work in blue and orange color. Go back to the reports and now you go to the resources section. You can go to the cost section. For instance, I select the cost overruns. Here for side 1, this was the difference, 650. Side 2, आपके 150. Side 3 has no difference yet because हमने भी information add नहीं की है. और साइड 4 को आप देख लें. अच्छा, फिर उसके बाद आप जाएं कॉस्ट सेक्शन में और एंड वैल्यू मैनेजमेंट की आप कैलकुलेशन देखना चाहें तो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस इसने आपके लिए ऑटोमेटिकली डिफरेंट ग्राफ्स वगैरह में भी आप इसको देख सकते हैं. एंड एस्टिमेट एट कंप्लीशन इज नाउ 20,546. आपकी हर जो 4,850 into 4 आपकी earned value digit at completion value was 19,400. Now once you cannot achieve the project outline जो budget होता है, so you calculate estimate at completion. In the estimate at completion, now the value has been revised and now the project cost is 20,546. Actual work, actual cost of work performed, ये actual पैसे आपके लग चुके हैं और budgeted cost of work performed ये आपके earned value से इसी बेसिस कैलकुलेट किया सारा. अच्छा, फिर आप वापस जाएं रिपोर्ट सेक्शन में, कॉस्ट में जाएं, रिसोर्स कॉस्ट ओवरव्यू पे आप देखना चाहें तो ये आपके लिए एक और एरिया है. आप देख सकते हैं कि जो मटेरियल है उस पे आपकी 16,800 आपका टोटल खर्चा है और जो लेबर थी, जो ह्यूमन रिसोर्स था आपका, उस पे 3,400 रुपए आपका खर्चा आ रहा है. और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये आपका रिमेनिंग वर्क है और जो आप एक्चुअली काम परफॉर्म कर चुके हो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपकी ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है. लेबर में आप देखें तो एक्चुअल वर्क आपका 22.32 आवर्स, एक्चुअल कॉस्ट आपकी इतनी आ चुकी है और रिमेनिंग स्टैंडर्ड रेट आपका जो है 850 रुपये पर डे आपका आ रहा है. फिर आप रिपोर्ट्स में जाएं जी, फिर इन प्रोग्रेस में जाएं. मैं क्रिटिकल टास्क पे क्लिक करता हूं तो सिंस टास्क नंबर साइड नंबर 1 and side number 2 has been completed, so here that those rows have been removed from here. You can see here only side number 3 and side number 4 with this information. The percentage of work completed with the remaining work and resource needed to complete this task. ये critical पार्ट जो आपका था प्रोजेक्ट का उसकी एक्टिविटीज है ये. अच्छा, फिर उसके बाद आप चले जाएं लेट टास्क. फिर उसके बाद रिपोर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं क्योंकि सिंपल एग्जांपल है माइलस्टोन नोट, ये सारी डिटेल्स सारी रिपोर्ट्स आपको इजीली यहाँ पे नजर आती हैं. So this was a very simple and common example of using the software to set up the baselines for the project and how we can generate different reports in the project. The first thing is to provide the baselines to the project. Baselines include cost baseline, schedule baseline, and scope baseline. Based on the scope baseline, we decompose the activities. So जी हमारे जब project में हम जब गए तो हमारी जो activities थी वो activities ये side 1, side 2, side 3, side 4 थी. जो information आप provide इसमें आप करते हो वो सारी की सारी information जब आप provide इसको कर देते हो तो उसके बाद आपको baseline में इसको convert
करना पड़ता है। और बेस लाइन कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट आपका अप्रूव हो चुका है। अब इसके बाद जब आप एग्जीक्यूटिंग फेज में जाओगे तो जरूरी नहीं है कि आपने जो प्लान किया हुआ है वो अकॉर्डिंगली आपका चले, वेरिएशंस आती हैं, तो बेस्ड ऑन दी वेरिएशंस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि आप अहेड ऑफ स्केड्यूल जा रहे हो या बिहाइंड ऑफ स्केड्यूल जा रहे हो, आप ओवर बजट जा रहे हो, आप अंडर बजट जा रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू विल हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स through the meetings, and then if there's a change necessary for the project then you will have to go to the change control board. So जब आप इधर अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में जाते हो तो अर्न वैल्यू मैनेजमेंट में हमारे पास काफी डिटेल्स आ जाती हैं जिसके जरिए हम फिर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें SPI is 1 represents that you are on track, 1 indicates you are on track, but here 0.79 means that your project is running behind of schedule. The project side 3 was supposed to be completed on day 3 but you completed 79%. सो यहाँ पे आपकी स्पीड स्लो जा रही है। जब आपकी स्पीड स्लो जाएगी तो फिर यहाँ पे देखें आप दूसरी चीज CPI को आप देखें 0.88 का क्या मतलब था? 0.88 का ये मतलब था कि आपने हर 1 रुपए के अगेंस्ट 12 सेंट जाया किए, 12 पैसे आपके जाया हुए हैं। यानी 1 रुपए या $1 में से आपके 12 पैसे या 12 सेंट आपके जाया हुए हैं। यहाँ पे आपके 3 सेंट जाया हुए हैं क्योंकि आपकी जो प्लान वैल्यू थी 4850 थी और आपका एक्चुअल खर्चा जो है ज्यादा आ गया है, तो आपने पैसे लूज किए हैं। तो जब आपकी CPI 1 से नीचे होती है तो इट मीन्स दैट यू कंप्लीटेड दीज 2 एक्टिविटीज बट विद ओवर बजट, आपने ज्यादा पैसे लगाए हैं। ठीक है जी। TCPI देखें तो माइनस में है, माइनस में आप जब देखें तो आप देख लेंगे कि वहां पे आपकी गड़बड़ आई है। वेरिएंस आपने इसने आपके लिए कैलकुलेट करके बता दी। BAC जो था वो आपका ये था, लेकिन एस्टिमेट एट कंप्लीशन, जब कंप्लीशन हुई आपकी एस्टिमेट आपका ज्यादा आ गया है। सो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू द प्रोजेक्ट, एक्टिविटी लिस्ट, assigned start date, end date, we assign resources, and then we set a baseline, and afterwards we just provide the progress to the project activities and it calculates each and everything for you. So we have completed this project 2019. From next week, inshallah, we will start learning another software, a very good software that is called Asana. In Asana software, we run the project management activities. It's a very good online cloud-based system. So inshallah, we will try to complete that Asana software within 2 weeks. और उसके बाद फिर I will take you to do another software called Microsoft Visio. Visio में फिर हमारी ग्राफिक्स वगैरह सारी वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना है या आपने कोई डायग्रामिंग करनी है तो वो उसमें बड़े अच्छे तरीके से हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो दिस अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स वी यूज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल सॉफ्टवेयर इन डिटेल इंशाल्लाह विद यू।